Hi investors and traders, welcome back to the channel. I'm your host Dr. Seema Jain, and today I'm going to teach you something very exclusive. Probably you will find it on no other channel, right? As I have asked you people to write in the comment box whether you would like to know about custom index formation or not, I'm doing that for you. Today in this video, I will be doing it. So what I really want you to do is, in case you have not watched this video, this sector had a massive breakout. If you go and watch this video, you will understand what I'm talking about. I'm talking about the custom index that you can form. You can form the custom index of your favorite sector. Like for me, my favorite sectors are cement sector, like paper sector, sugar sector, chemical sector. These are my favorite sectors. So you can collect all those companies, all those industries or the stocks and put them in a custom index. So I will be telling you how exactly can you do it and what will be the process. So let's start and come to the trading view, and we need to make a custom index. So best for that is you go to the screener.in, and in screener.in what you can do is you get browse sectors, like you get all the sectors here. Like probably आपने इतने sectors सुने भी नहीं होंगे जो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जैसे एग्रोकेमिकल्स है, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, अल्कोहलिक बेवरेजेस है, या फिर आपको ये इंफॉर्मेशन जो है मनी कंट्रोल पे भी मिल जाएगी, बट आई प्रेफर इट ऑन द screener.in. उसके बाद आपको ऑटो एंसिलरीज मिल जाएगी, केबल्स के आपको मिल जाएंगे कि कितनी सारी ऐसी कंपनीज है जो केबल्स में बनाती हैं, या अल्कोहलिक बेवरेजेस में आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सी कंपनीज अल्कोहलिक बेवरेज की कंपनीज हैं, या आपको कंप्यूटर एजुकेशन की कंपनीज मिल जाएंगी जैसे एनआईटी, एप्टेक, ज़ीलर्न, ऑल दिस. सो आप जो भी आपको अपने फेवरेट कंपनीज हैं उनके लिए एक सेक्टर बना लीजिए. तो फॉर एग्जाम्पल हम बनाते हैं अभी हम बनाते हैं सीमेंट सेक्टर का, राइट? हियर इज सीमेंट सेक्टर. तो सीमेंट सेक्टर में कुछ टॉप, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज ऑल्सो, कुछ 35 companies है. If you want, you can put all 35 companies, or you can put them with the market cap. मार्केट कैप जो हाईएस्ट मार्केट कैप है जिसकी, वो कंपनीज आप ले सकते हैं, और कुछ कंपनीज को आप इग्नोर कर सकते हैं जो कि जिनकी मार्केट कैप जो है 100 करोड़ से कम की है. सो 100 करोड़ या 500 करोड़ से कम है, ऐसी कंपनीज को आप इग्नोर कर सकते हैं. ठीक है. तो अब हमने सपोज हमने यहाँ पे मिला अल्ट्राटेक, अंबुजा, श्री सीमेंट, एसीसी, तो हम इसको इन सारे स्टॉक्स को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं. ओके, सो आई एम गोइंग टू बी राइटिंग इट हियर. Ultratech Cement, then I'm going to add Ambuja, then I'm going to add ACC, then Ramco, then India Cement, then let's say what are the other companies here? JK Cement, Dalmia Bharat, JK Cement, Dalmia Bharat, then JK Lakshmi, then let's see what are the other companies here: Shree Cement, Nuvoco, and Birla. Shree Cement, Nuvoco, and Heidelberg is also one of them. Then we have Sagar Cement, and Star Cement. Sagar Cement, Star Cement. Then let's see Orient Cement, and is there any big one I have missed out? Orient Cement and Kesoram Industries. Orient Cement, Kesoram Industries. Now what are the other? Okay, so we will not be able to take many because only 10 stocks can be added when you're making an index. So I have put the
custom index here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We will not be able to take the rest. So anyway, let it be there, doesn't matter. So what we will do, we're just going to make our custom index. So let's start. So what I'm going to do here, Ultratech, keep adding all of them. Ultratech Cement, Ultratech plus Ambuja plus ACC. If you want to give a weightage, you can give weightage as well, but I think it's okay without weightage as well. Then Shree Cement. Then Shree Cement के बाद हम जाते हैं Ramco. Then we will add up how many of them are there? 1, 2, 3, 4, 5 हो गए. We'll take 5 more. Plus now Ultratech, Ambuja, ACC, Shree Cement, Ramco. We'll take India Cement. We'll take JK Lakshmi Cement, JK Cement and JK Lakshmi Cement. JK Cement and JK Lakshmi Cement. JK Lakshmi Cement. I think we are done with the numbers. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8. I'll add JK Cement as well. JK Cement and Heidelberg Cement also I will add here. So we are done. Now see, we have added about 10 stocks. So we have to find the average of all of them. So I'm going to divide this by 10. Okay. And what I'm going to do, I will enter it. Okay. Now what I see on my screen is the index. I have just divided by 10 because I selected 10 stocks and I entered it and I got the index in front of me. Now I want that index here because I want to track it later on. So what I'm going to do, so I clicked on the plus sign, right? And I did Alt W, Alt and W. Once I do that, I have the index in front of me. Okay, now I can track index. You can do the similar thing for all your favorite sectors. It could be alcohol sector, it could be fertilizer sector, it could be cement sector, it could be anything. Now this is your own index. You can apply RSI, you can apply MACD, you can apply stochastic, you can apply moving averages, and you can see what is happening. So in case you are just working without any, you can see there is a consolidation happening in the sector. So this is how you actually form your index. So let me just quickly once again run through. Go to the screener.in and select your favorite sector. जो भी आपको अच्छा लगता है, अपनी पसंद का सेक्टर आप सिलेक्ट करिए. जैसे सपोज आपको लगता है कि अगर यहाँ से हम देखते हैं, हमको पेपर सेक्टर अच्छा लगता है, ठीक है. हम पेपर सेक्टर को हम पैकेजिंग में भी देख सकते हैं कि ये पैकेजिंग में इतनी सारी कंपनीज है, 25 कंपनीज है, नहीं बहुत सारी और कंपनीज है. इसी तरह हम कोई भी सेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे हम लेते हैं पेपर सेक्टर को. सो पेपर सेक्टर इज हियर. पेपर सेक्टर में करीब 47 कंपनीज है. ओके, हम इनमें से केवल टॉप कंपनीज को ही ले सकते हैं, हम सारी कंपनीज को नहीं ले सकते हैं. तो आप क्या कर सकते हैं, मार्केट कैप के हिसाब से इसको ऑर्गेनाइज कर लीजिए. टॉप एट द मतलब जो टॉप जिसका सबसे ज्यादा मार्केट कैप है वो टॉप पे, फिर उसके एंड सो एंड सो फोर्थ. तो आपके पास सेंचुरी टेक्सटाइल आ गया, जेके पेपर आ गया, वेस्ट कोस्ट पेपर आ गया, सेसाशाई. तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सारे स्टॉक्स रखिए. आप अपने 20, 25, 30, 40, 47 स्टॉक्स जो है, सारे के सारे 47 स्टॉक्स आप अपनी लिस्ट में रखिए, बट एक एवरेज बना लीजिए मार्केट कैप के हिसाब से, और फिर आप उसको एनालाइज करिए. तो अगेन क्विकली हम एक क्रिएट न्यू लिस्ट हम करते हैं और इसमें बनाते हैं पेपर स्टॉक्स. पेपर स्टॉक्स पे जाते हैं एंड
यहाँ पे हम इसका इंडेक्स भी बनाते हैं, तो हम क्विकली ऐड कर लेते हैं। मैं इसको दूसरी जगह रख के I'll keep on adding quickly Century Textile and Industries, फिर JK Paper, राइट। अब इसके बाद इसको आपको इसका इंडेक्स बनाना है फॉर एग्जांपल, तो आप सिंपली यहाँ पे जाके आप ऐड करना शुरू करिए। इसको डिलीट कर देते हैं, कुछ भी यहाँ से शुरू करते हैं। Century Textile, then you do plus, you do the rest of it, you know, like JK Paper, then you do West Coast Paper, seven, eight, just divided by 8 so that you find out the average and enter. So what you see is the paper index, right? This is your customized paper index. Now you want to bring it over here, like so that you can track it later on. So put your sign on the plus and Alt W. Once you do Alt W, this will come into your list. Like if you do here Alt W here. Now you get this over here, the index that you have made, and post it here. So ये आपका इंडेक्स आ गया 2714.6, ये आपका इंडेक्स आ गया। आप इस पे जो चाहे अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है कि कहाँ इंडेक्स कंसोलिडेट हो रहा है, कहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, where you need to exit. All information is right in front of you. सो डबल टॉप बन रहा है, दैट मीन्स टाइम टू बुक प्रॉफिट, एंड आप उसको चेक भी कर सकते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या हो रहा है, जेके पेपर में क्या हो रहा है, वेस्ट कोस्ट पेपर में क्या हो रहा है, शेषाशाही में क्या हो रहा है, तो टॉप बन रहा है, एग्जिट कर सकते हैं आप। आंध्रा पेपर में टीएनपीएल में क्या हो रहा है, तो यहाँ से आपको आइडिया लग सकता है इज इट टाइम टू एक्यूमुलेट और इज इट टाइम टू एग्जिट। और अगर आपको अच्छा लगा कंटेंट, अगर आपको ऐसा लगा कि ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल इन्फॉर्मेशन थी, आपको लगता है इस इन्फॉर्मेशन को आप यूज कर पाएंगे, तो गिव अ थम्स अप, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो विद अदर्स। Invite more friends, family members to join me live from 10 to 11. I'll be very happy to do my best of research so that we can all collectively make money. With this, I'll be signing off, your host, Dr. Seema again, and see you in the next video, and see you live in the live market every day from 10 to 11. All the best. Take care. Bye-bye.